I direct to Gabriel. Do you copy? Send it in, sir. There is a lawyer waiting for you at the parking. 25. Give me 2 mics, please.
Can I have one officer RPD with me? Negative from my end. I'm just creating a report. Here you come. Direct to Speedy Morris. 10%. Can you pick me up from upper parking, MRPD? We are already full and we are at the courthouse. Even with us double I up. just, I just need to come to the courthouse. So. Later pickup. 10-4. 76. Hello, hello, hello. Hello. Arianas. Hello. इज गुड सर आप FTO? एफटीओ तो नहीं बताओ क्या हुआ What कौन happened? है FTO लाइक अभी ऑन ड्यूटी? मेरे को नाम बता सकते हो क्या? राइड अलोंग पे जाना था। आप कोई भी लाइक यू नो व्हाट यू कैन सी probation ओके ओके yeah so you ऑल can ask any of the like probation officer when I'm a probation officer but I'm not going on field right now I'm doing some like report works and stuff ओके नो वरीज। तो किसी और से पूछना go for ask for make sure करना कि वो
केडेट ना हो जिसके साथ आप राइड लॉन्ग जा रहे हो, यू कैन ठीक है। हॉप इन विद एनी अदर स्पीकर, ठीक है, बोल देना और कि आई एम केडेट, आई एम लुकिंग फॉर अ राइड लॉन्ग, ओके ओके, ठीक है, राइट, थैंक यू। ओके। 824 to dispatch requesting a ride along. सर मेरा कॉल आया था क्या रेडियो पे? मैं रेडियो पे नहीं हूँ यार, मैं आप 311 करके भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, यू कैन आस्क इन 311। क्या हो गया रेडियो? कि हमें क्यों बुलाया गया, हम तो डर गए थे सर। कुछ टैबिंग्स हुई थी जिसमें आपका नाम लिया गया था, तो हाँ हम आपको पूछ रहे थे कि आपने कुछ किया। हाँ सर, अगर आपके पास कोई प्रूफ मिले ना सर आपको, तो नहीं, आप इसलिए हमें मैं अंदर डालिए। इंट्रोगेशन, मैंने डायरेक्ट अरेस्ट थोड़ी किया है आपको। वही सर, हम तो अपनी तरफ से क्लियर है, मैंने तो फोन में बात करी थी सर, क्योंकि वो लोग गाड़ी में हमें ना सर उधर आए थे, क्या कहते हैं, एक और चीज, हाँ सर, हम वहां पर गए थे ग्रुपी में, तो वो लोग आए थे, उन्होंने हमको हैचेट दिखाया और गाड़ी में बिठाया और वो लेके चले गए हमको। फिर हमने तो बोला आपने कि हम एफआईआर नहीं। फाइल की? कांच। सर मैं डर गया था सर, वो फिर उन्होंने तो मेरे को ये एफआईआर बोला। फाइल करनी चाहिए, ऐसे एफआईआर करेंगे तो हम। सर हाँ, तो वही चीज़ है सर, उन्होंने बोला तुम मिले हुए थे, ये नहीं, मैंने बोला मैं तो नहीं मिला, तो कहते शेख लोग हमें भी, तेरा क्या लगता है सर, तो मैंने बोला मेरा तो कुछ नहीं लगता है वो, तो उन्होंने बोले चल निकल यहाँ से, हमें लात वात मार के सर गिरा दिया, हमारे सर में लग गई सर, उसके बाद हमें छोड़ दिया सर। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यू कैन हैव अ गुड डे। जी सर, थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द समनिंग। आते रहेंगे मिडास भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाए हम फिर रशिया वापस। यप यप, यू कैन गो अहेड। जी भाई सर। आ जाओ यश। कैसे और माइड सर, क्या चल रहा है बढ़िया जीवन में? बढ़िया, कुछ नहीं, समन किया था, ड्रिल समन चल रही है वाले पे। पीछे? हाँ वो पीछे क्या, वो हाँ वो रिपेयर हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन इसमें, अच्छा, एमआरपीडी में। हाँ सही सही। यार स्लिम जिम क्यों किया मैं? वो चाबी बनानी आती है? मैंने सुना बहुत मुश्किल है। इजी है पर वो अटक चुका है, वो नहीं चल रहा, वो क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर अच्छे से, तो हम सो जा रहे हैं, आ रहे हैं 1-2 मिनट। ब्रो फकिंग लेजी।
खाना पानी लेने चले। ओके नीचे से आ जाओ। नहीं चल रही है मेरी नहीं है। हो रही है अरे चुतिया पे हो गया। एक सेकंड देना जरा चाबी दो। ड्राइविंग सीट। किस गिव नहीं मी किस मिलेगी। गिव मी कीस बबलू। दे रहे। मिली। नहीं वाह। वापस। वापस लो। पार्क कर लो ना व्हीकल को। जस्ट पार्क द व्हीकल। ये भी नहीं खुल रही। रुको मैं एक बार ऊपर ऊपर से वो करके आओ। हाँ बैठो। मैडम सर आपकी रैंक है? प्रो भी हूँ अभी। प्रो भी ओके। अभी तो वो नहीं दिया मैंने ऑफिसर एग्जाम। हाँ बनने कोर्ट हाउस जाता है कोर्ट केस में भी। खाना ले ले थोड़ा सा। चलो ले लेते हैं। चलो तुम भी खान मैं भी खान, क्या बात है। आप भी खान मैं भी खान, ये हमारे लिए खाना लेंगे। इनको भाई को 2 मील लगा दो मेरी तरफ से। नहीं 2 बहुत ज्यादा है, एक ही काफी है सर। नहीं नहीं, दो नहीं, बहुत 2 ले ज्यादा लो। है। 2 ले लो
फिर 3 ही कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी मैं ले लेता हूँ एक। 3 कर दो, चलो 3 कर दो। भाई गर्लफ्रेंड के लिए सेहत चाहिए होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हमारी बहुत है। सर ड्रिंक में क्या लोगे? ई कोला लोगे? सर कुछ भी पिला दो सर, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग। हाँ दे दो इनको, जो पिलाओगे पिला दो बस। यार देखो कि माशाल्लाह कितने भले इंसान है सर। आपका नाम क्या था दोबारा बताना? खान सर? अब्दुल नाम है। अब्दुल। अच्छा लगा सर आपसे मिलके। मुझे भी अच्छा लगा। पेमेंट वापस करना पड़ता। कर रहा हूँ, सब्र कर ले। चला जाता है सर। ये ले। थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। आपका ऑर्डर है। हेलो लूना। साला से डूइंग गुड। डिड यू बताओ क्या करते हो आप? डिड यू कुछ भी नहीं, वेला मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, बस हम दोनों ही यहाँ पे घूम रहे फिर रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गर्लफ्रेंड घूमती सर 2 मील लगा देंगे। बाय द वे मेरा नाम यश, आपका? कल मेरा यहाँ पर झगड़ा हुआ और मेरा नाम तिवारी से 2 मील अभी लगा रहा हूँ सर आपके पटक से। हाँ, ये ई कोला विद आइस कर देना ड्रिंक्स में। हमारा कंधा है। ठीक है सर। ई कोला लाइट करूँ सर? हाँ भाई, आपका नाम क्या था? ई कोला। गैब्रियल। सर आपका पेमेंट मशीन पे आ गया है। आपका ऑर्डर नंबर ये बेंच बेच के मिली है। तुम लोग और जगह दिखाते पड़े तो शर्म आती है तुम लोग? अब बावले हो गए थोड़े से। नहीं हम बावले गांड में उंगली करना ही आता तुम्हें, और कुछ नहीं आता? नहीं ना, और कुछ पता चला फिर केंजी के ऊपर करने लगे। केंजी को अभी ये तुम्हारी गांड में पसंद आ गई है। He is the ADA. बिल्कुल ठीक है। Yeah, he also has that type of कैसे हो तुम? monotonous voice. हम बढ़िया। बस हमसे मिलो, हमारा एक नया दोस्त बना है मेडी। कौन दोस्त बने? हाँ क्या नाम है? हाँ हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर दोस्त हैं, यश। इनसे मिलो। नाम क्या इनका? यश सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बढ़िया। अब बताएं क्या नाम बताया? Okay, got it. सर हमारा नाम मैडी है सर। अभी आए हैं सर, पैसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमें खाना खिला दिया। मैडी खान। अच्छा। सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सर यश राव। यश राव। सर मेरा भी बड़ा दिल करता है सर, प्लीज जो ज्वाइन करने का सर, कोई एप्लीकेशन है तो सर बताओ। इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू है। Yeah, give me 2. सर कोई उसका सिलेबस मिल जाए, मैं थोड़ी तैयारी करके आऊँ। आई विल बी रियली नहीं, अप्रिशिएट। कुछ ऐसा सिलेबस की जरूरत नहीं, बस जाके बात करनी है इंटरव्यू में, जो पूछे बस बता देना। इन जैसे अच्छे ऑफिसर हो तो मतलब पुलिस में कोई भी हो सकता है, मसला नहीं। सर थोड़ी पर्ची चला दो, कुछ दिलवा दो हमें। अरे नहीं, सबके लिए खुले हुए हैं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, सीख जाओगे। सीरियसली नहीं, एक्सपीरियंस है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड का। पहले हम जो है वो सिक्योरिटी गार्ड में करते थे। 126 किसका है भाई? 126 ऑर्डर नंबर हमारा है। Here you go sir, enjoy your meal, have a nice day and visit again. ये लो भाई तुम्हारी मील, पकड़ो। लाओ पकड़ाओ। ये इस कंटेनर में से निकाल के अपनी जेब में रख लेना, वरना तो ये कंटेनर की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो फिर खाना भी गायब हो जाएगा। अच्छा इतना सस्ता ये लोग यहाँ पे 3 मील किए थे। हाँ तो 3 ही तो है। थैंक यू मैम। यहाँ पे तो 2 डब्बे हैं मेरे पास, पता यू एज वेल। एक अभी दिया है ना, देखो उसको कंटेनर को खोलो, उसके बाद देखो अंदर होगी मील। हाथ से खिला दो। डन सीन हाथ से खिला दो। सही कह रहे हो। डन सीन है। गरम मैं जाके बीवी के साथ बैठ के खाता हूँ। सर वो फिर एप्लीकेशन में किस दिन जाके फाइल करूँ? कब तक एप्लीकेशन ओपन है? यार अभी तो देखो कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है? हाँ तो कोर्ट केस थोड़ी देर बाद ना कभी भी चले जाना वहाँ पे पीडी, और वहाँ पे 311 कर देना है कि इंटरव्यू के लिए आए हो, लुकिंग फॉर ऑफिसर, और वहाँ पे बोल देना कि इंटरव्यू के लिए वो डिटेल्स दे देना। अगर कोई होगा इंटरव्यू वाला तो वो दे देगा। सर थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपका दे सकता हूँ, क्या पता मेरा थोड़ा काम आसान हो जाए। नहीं, मैं भी निकल जाऊंगा अगर रेफरेंस दोगे। एक सेकंड रुकने जरा। अरे मार्कस सर, कोर्ट केस में नहीं। दिहाड़ी टाइम। अभी कोर्ट केस चल रहा है, आई थिंक सो, प्रोबेबली सारे सिटी हॉल पे। अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दिहाड़ी जरूरी है भाई, कोर्ट केस के बारे में। चलो
रोजी रोटी का सवाल है उसकी। Order number 129. भाई उसको हमसे ज्यादा मिलता होगा, इज अ सार्जेंट, ज्यादा ही मिलता होगा। कर तो रहा है उतनी पावर सार्जेंट हो। वाले काम, मैकेनिक। मिलते हैं मेडी भाई, बाय बाय। जरूर जरूर, बाय बाय, टेक केयर। भाई मुझे नहीं पता अच्छा था यही सार्जेंट आया ये था। अबे पता नहीं अंदर कुछ लेने आया था, आर्मरी में वो खड़ा था। कहता है राहुल क्या हाल है। मैं कहा बहन जो पता नहीं कौन बोल के गया, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं। मार्कुस हुआ। हाँ यही था, मैकेनिक के कपड़े पहन के अंदर घुसा। मेरे को लगा कोई वैसे ही कुछ काम करने आया होगा। यार माइडे सर साइन ऑफ वाइन ऑफ कैसे होंगे? भाई एफटीओ को पकड़ो सुपर शिफ्ट के। आप नहीं कर सकते मैं तो एफटीओ, मैं एफटीओ हुई नहीं। बनो यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर? डूड आई हैव आपको तो टोल्ड 36 साल का एक्सपीरियंस है मैंने सुना है। बट 5-6 है, मैंने एफटीओ का काम किया है, बट आई डोंट नो व्हाई। मैं बोला भी था कि इंटरव्यू के आई विल डू एफटीओ वर्क, आई कैन बी एन एफटीओ, बट पता नहीं 2 लोगों को सिलेक्ट किया है अभी, हमें पता नहीं बहुत लोगों को सिलेक्ट नहीं किया है। लेट्स सी व्हाट डू दे डू। ओके ना पीडी पार्किंग किधर है? शायद ये नहीं है। Officer. हाँ Yes, सर yes, yes. बताओ। Can you help me by giving me some lift, brother, please? No, We are in urgency. we are here itself, yeah. Please, officer, I will. Sorry, man. Sorry, I sorry, will call brother. you daddy, please. जी। पापा बोलो बेटा पापा। ये भी नहीं है क्या? नहीं है ये भी। ये भी नहीं है। रख ये दो तो कौन? पीढ़ी है। हाँ रख दो, पीढ़ी तो है। पीढ़ी है क्या ये? जो चुराएगा गोली खाएगा। मैं शादी में है। ऑफिसर ठुकरा रुको के मैं। मेरा प्यार। अरे सर मेरा थोड़ी ना बहुत इंतकाम जरूरी काम से देखेगी। आए। और ये होते तो घर क्या तक जरूरी छोड़ के काम आते से आया हैं। है सर? कोर्ट केस चल रहा है बहुत भयंकर। अच्छा कोर्ट केस कर रहे हैं, किसका हाँ। किसका चल रहा है सर, हमें बताओ। पीडी वर्सेस एवरीवन। ओ मतलब कोई तो है। अच्छा ठीक है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ही कोर्ट केस जीतोगे। हमारा Thank you, आशीर्वाद ले लो सर, $500 दे दो। 500 होते तो साले यहाँ पे थोड़ी होते हैं। $100 दे दो सर, $100 दे दो अबे यार। तुम भिखारी कैसे भी हो, गाने गा लिफ्ट रहे हो? भी मांग रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे पैदल है सर, $100 दे दो, कुछ खा पी अबे लेंगे कैब यार। बुलाओ, हैं? कैब बुलाओ। कम चल। अरे चलो कैब के मिलते लिए हैं। पैसे होने चाहिए ना भाई साहब। बहुत चलो भाई पैसे साहब हैं। मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय भाई साहब, बाय बाय। अच्छा शेरिफ ऑफिस है ये। डूडू शेरिफ है ये, शेरिफ ऑफिस है। सिटी हॉल के बगल में शरीफ ऑफिस मिला था। पता नहीं Very हमें nice. थोड़ी पता कैसे भाई, प्रोटेक्शन के लिए रखा होगा भाई, पता चला कुछ वैसे गोली वोली चल गई है। शेरिफ तो है ही नो। बंद किया होगा अभी तो, एलएसपीडी काम कर रहे हैं ना। कोई नहीं माइडे सर, आप बन हम बनेंगे शेरिफ। Was that a legitimate message or a reply to an application, or do you want to add something to that? Again, I object. It's we're going to add into that is a Your relevant Honor, no pinpoint questions. I am only requesting him to express the things in Objection is detail. sustained. You थोड़ा direct जाइए. The civil code doesn't play around with emotions or opinions. I want hard facts. Noted, facts Your Honor. I'll continue. only. I don't want the rephrase my laws or question. legislation. I just want facts. Okay. I'll rephrase my argument, Your Honor. Question. Sorry for that. ऑफिसर डांटे ली, मुझे आप ये बताइए उनको वो मैसेज क्यों भेजा गया था? The message was a curricular error. That's why it was sent to him. Sorry, was it? If I may correct, Yeah, was it? it would be helpful. Do you mean clerical? Yes. All right, Your Honor. As mentioned by Officer Dante Lee, the message sent by the officers to Mr. Vin Marcus was a result of a clerical error.
by which both officers made the clerical error. Would you like Your That's Honor, what- would you एक like second, to एक second, interpret what is clerical error? नहीं एक सेकंड रुकिए रुकिए क्रॉस एग्जामिनेशन का वेट करिए अनोखा जी क्या कर रहे हैं आप Sorry sir. बस पूछी जी जरा इनका संभाल के रखिए अपने Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. So लाना I कांसू को। apologize on behalf of मेरे को Anoka. गुस्सा मत दिलाइए नहीं तो मैं बता रहा हूँ अगर मैं उपरोक्त भाषा का उपयोग करने लगे यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा कोर्ट के अंदर अरे गुस्सा हो गए Sorry. ऑफिसर डांटे आप ये एडमिट करिए कि आपसे और हेनरी चार्ल्स से जो दो ऑफिसर्स हैं इन्होंने क्लेरिकल बेस्ड दो मैसेजेस भेजे थे आई जस्ट वांट यू टू से यस और नो दैट्स इट Yes. ओके एंड प्लीज स्पीक अ बिट लाउड या प्लीज प्रोसीड विद योर examination. Your Honor, I would also like to clarify that Officer Dante Lee here is the lead day shift lead of LSPD, and Mr. Officer Henry Charles was assisting him for the HR process. Your Honor, Officer Dante Lee and Officer Henry Charles are decorated officers of LSPD, and their on-field performance is quite appreciable. You are not objecting, but I'm gonna go ahead. I'm gonna go ahead and tell you. I'm gonna tell you. मेरे को यहाँ पे आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए. जब इसे facts बताइए. You're just doing examination. Sure, Argument Your के Honor. time पे अपनी opinion दीजिएगा. I'll cut it short, Your Honor. I'll cut it short. What I'll I give you time mean for to your say here- arguments. आप arguments में जाके जितना आपको अपने officers को महानता में दिखाइए. मुझे इससे कोई problem नहीं है. अभी बस just continue with the examination. Noted, Your Honor. I'll continue with my statement. I'll cut it short. And Your Honor, what I was trying to portray here is that the police department, LSPD, they are now working with two things. The first would be the operations of the city, that is protecting the citizens. Second would be I object, the Your hiring Honor. of What is officers. the relevance of all this in this case? Your Honor, I am countering to the arguments presented by the appellant. The appellant asked specifically that why was that message sent. I am just No, we trying to didn't. explain what is the. We said it is a क्या था अनोखा जी? malpractice. क्या malpractice? We mentioned that it is a मच्छी malpractice. We मार्केट didn't मत ask. बनाइए मच्छी मार्केट मत बनाइए यहाँ पे मच्छी मार्केट नहीं बनाइए मुझे वो नहीं चाहिए यहाँ पे अब अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करने का टाइम दूंगा अभी सिर्फ एग्जामिनेशन करिए आप I'll give you time for your argument. Don't worry All about right, Your that. Honor. Defense? All right, Your Honor. Mr. Officer Dante Lee, please tell me why was his application Mr. rejected? Officer Dante. There were 4 reasons behind it. First was his lack of professionalism. Second, improper appearance, lack of self-regulation, and he was incompetence. All right. So, was this the reason for? Acha, tell me about the first incident. So, पहली बार उन्होंने apply किया. What was the reason for the rejection of application of Mr. Vin Marcus? I object, Your Honor. He asked already the reason of rejection, and now he's making it two different scenarios of the first and second time. Ask and No, answer. it's overruled. He didn't specifically Thank you, ask. Your Honor. That was sustained by the objection that you put out. वो question sustained कर दिया गया था. Now he has the foundation for that. I'm going to overrule your objection. All right, sir. Yeah, please proceed. Thank you, Your Honor. Officer Dante, please tell me पहली बार उनका application क्यों reject हुआ? First time it was rejected for his lack of improper, appearance. It was not in a very good way. He showed up for interview in a bunian and a cowboy hat with a pant, and he didn't had that much patience in him. All right. And do you want to add anything, or we should move to? Should I move to my next question? I object, it's Vivek. Do you want to add anything, sir? You should have pinpointed questions. मैं पूछे मैं नीचे उतर के मारूंगा अब आपके क्यों सर अरे बाप रे बाप overruled. Thank you, Before Your you Honor. proceed, Officer Dante, I would like to remind you that you're under oath and the character testimony that you gave. I want to ask this question कि ये आपने as official hiring capacity के अंदर दिए of the appellant Bin Marcus. Just say yes or no. Would be fine. May I ask something? हाँ जी please. थोड़ा सरल भाषा में बता देते तो जो आपने कैरेक्टर टेस्टिमनी दी है हायरिंग के टाइम पे उनके हायरिंग को लेके क्यों आपने उनका फॉर्म रिजेक्ट किया या एप्लीकेशन रिजेक्ट की दिस इज योर ऑफिशियल टेस्टिमनी ऑफ हिज कैरेक्टर राइट not as a character, as an applicant. हाँ वही बात कर रहा हूँ
वही बात कर रहा हूँ Yes. मैं, उसी सेंस में बात हो रहा है. Yes. Okay, please move forward. Yes, I'll move ahead. The second time उनका rejection क्यों हुआ था, officer? Second time, same reason. Lack of improper in my bad, my tongue is splitting. It's fine, it's Improper fine. Please take your appearance time. and self. आराम से, please don't take any stress, officer. आराम से खुल के बताएं. If you want water, I can offer you some. If you don't No, mind, thank Your you. Honor. Third would be lack of self-regulation, and fourth would be incompetency. अच्छा, what do you mean by lack of self-regulation? थोड़ा सा इसमें मतलब क्या होगा इसका? Okay. He was सोच के बताएगा वो भी. As compared to other candidates, and as we are looking how our officers should be, he was not that up to the mark. He was not patient every time. If we ask any question, he was not like he was not in a proper way, as if he was not having zero patience. He was just circling here and there. Second thing, he was not able to present himself properly. He was not able to give answers correctly. All right, I understand that. अच्छा, ऑफिसर डांटे, मैंने देखा उस मैसेज में एक टाइम, डेट एंड टाइम मेंशन था कि इस टाइम पे द एप्लीकेंट मिस्टर विन मार्कस हैज टू बी देयर. वाज ही देयर ऑन दैट डेट एंड टाइम? He was not there at that given time. All right. So उसका significance क्या था? Like अगर उस टाइम पे suppose he was asked, right, as mentioned as the evidence produced by the appellant, he was asked to be there at 3 p.m. उस टाइम पे कौन सी procedure होने वाली थी? What was he called there for? If he अगर वो selected होता तब क्या, then I'm supposed to answer this one, right? हाँ जी, मतलब अगर पीडी में उस समय वो वहाँ पे आते, 3 बजे एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुँचते, तो क्या होता फिर वहाँ पे? Very nice. Okay. A little bit confusion, like he was not selected. अगर वो उस time आता, we would have just informed him. He is giving you a hypothetical situation. अगर वो selected होते, Okay. और वो वहाँ पे आते, तो उनके साथ what would be your next step of hiring? जो If आपने he would clerical have जो आपने shown up on state किया, time. right? Clerical message जो आपका Yep, गया, yep. अगर वो Then सच होता तो क्या होता? At that time, we would have hired him. There would be another interview taken by Vikram, and then he would have been given his final job. All right. So what I would like to point here, Your Honor, is simple जो LSPD की hiring process है. After communication, LSPD का final procedure is कि जो वहाँ के command है, Vikram Singh Rathod, he is the one responsible for taking the final interview of the applicant, and at that moment the job gets confirmed only after the approval of the LSPD command, Vikram Singh Rathod. Okay. Right. But as you mentioned, did he ever show up on time Hello. for that? आवाज नहीं आ रही ऑफिसर आपकी. Sustained. बोलो सर, बोलो. बहुत ज्यादा खींच कैसे लिया हो आपने, ऑफिसर? और कितना हाँ, बढ़िया, खींचेगी, उनको बताओ. टाइम तो दीजिए क्रॉस एग्जामिन करने बढ़िया का. बढ़िया चिलिंग. All right, इधर Your एक Honor. मार्शल कौन आगे जीतेगा? भेजिए, उनको भी तो थोड़ा सिखाना है आपको. पता नहीं यार. All right, Your ये Honor. डिस्ट्रिक्ट I'll अटॉर्नी की PD पोस्ट के लिए ज्यादा ग्रीडी मत होइए यहाँ पे अल्फा जी. यार कहीं तो नाइट तुम्हारी जी. शक्ल देखी लग रही है. तुम क्या? ऑफिसर से पहले कुछ करते थे. Your Honor, I am done. I have no further चलो, मैं तो questions, Your सारी Honor. जगह ही काम to be the करता हूँ. alpha man. अच्छा मिस्टर वेस्पुची, कहीं तुम यश तो नहीं हो जो ग्रीन जैकेट डाल के घूमता था पीछे दो. हाँ, बाकी के बार नाइस. मिले थे. बहुत आ रही है. ओ नाइस टू मीट यू सर. आप ऑफिसर बन के बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर. Yeah, he's trying to be the धन्यवाद, alpha male in the धन्यवाद. code, you know. Okay. आप आप बताएं, ऐसे ही ग्रो करते रहो. क्या कर रहे हैं? No, beta, the alpha, you know. बस भाई चिलिंग्स. थोड़ा आज तेज घर बोलिए, लगवाने थोड़ा सा हैं. और तेज बोलिए. सर अभी आ रहा है. बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी. आवाज प्यारी नहीं, पर धन्यवाद आवाज तेज अच्छी आ रही है. धन्यवाद. हाँ, तो ऑफिसर जी, मैं आपको बस एक चीज पहले याद दिलाना चाहता हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले, कि कोर्ट में झूठ बोलना एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसको Objection, Your Honor. Already आपने उनको oath में बता दिया था. He is already under क्या oath. ऑब्जेक्शन क्या है? Your Honor, the appellant is trying to question the ऑब्जेक्शन क्या है? question the attitude of an officer. इसमें ऑब्जेक्शन ये होगी आर्गुमेंटेटिव. He is being बिल्कुल, Your Honor. argumentative with the witness. So मिल objection गया argumentative आंसर अनुगा करिए. को. Wrong objection के लिए I'm gonna overrule that. Thank you, Your Honor. No, तो I'm sorry. सर, जैसे कि आपने बताया था कि देयर आर 4 रीजंस ऑफ हिज रिजेक्शन. कैन यू प्लीज
जस्ट फॉर अ सीक ऑफ द लाइक क्लियर फॉर फर्दर क्लियरेंस आप एक बार बस रिपीट कर सकते हैं वो चार क्या क्या डिफेक्ट्स थे? Okay, first would be his lack of professionalism. प्रोडक्ट डिफेक्टिव है. Okay. Second would be his improper appearance. Okay. Third would be his lack of self-regulation, and third would be अरे incompetence. खड़े हुए हैं हम तो एंजॉय कर रहे ऑफिसर हैं खाना सारे खा के नहीं ऑफिसर आए एक क्या सेकंड आज? पे जो नहीं दिख रहा आपकी आवाज के अंदर मुझे. No, sir, it's actually a आजा तू भी huge long shift. It's time for me to get up. Your Honor, I would like to bring अबे to your मेरे notice साथ तूने that वॉल्ट Mr. मारना Danteli था is वो a मारना था lead तक of नहीं day मारा अच्छी shift भाई and his shift has almost ended. To be honest, it's वॉल्ट the आ end of गया his shift अच्छा for the day. अच्छा अच्छा चलिए. डन तो है डन है जैसे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ कोई अटेंशन नहीं ऑफ कोई नहीं योर्स ऑनरेबल जस्टिस ऑन इज दिस पॉइंट कि जैसे कि उन्होंने शुरुआत में अपने आर्गुमेंट में भी बोला था कि 4 रीजंस है एंड भाई सट्टा लगाएगा ना जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइम उनको पूछा गया लगा चुके हैं इनके स्टेट साइड से में ही सीजे. ह्यूजी की साइड से कि फर्स्ट टाइम कितने रिजेक्शन का का रीजन एंड सेकंड टाइम हजार का रिजेक्शन ना का रीजन ही सेड बोथ आर द सेम हजार है एंड नहीं ना लास्ट में बस बस एक वो है चीज उन्होंने ऐड किया था दैट इज इनकॉम्पिटेंसी. घर लेना ना तो 1000 मुश्किल से सो बचते इसके हैं बाद तो सर वो हम सट्टे में आगे हार गया तो मूव लौड़े फॉरवर्ड जाएंगे होते हैं. जैसे कि आपने बोला आप लीड हैं डे शिफ्ट के, एम आई राइट? Yes. ओके. तो सर आपका जो हायरिंग प्रोसेस है वो चालू कैसे होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए बस. Your Honor, we can't, objection, Your Honor, we can't talk about the exact hiring process. That would be confidential. SOP cannot be public. The parts which are not redacted have already been spoken by the officer. Your Honor, I Uh, would request a नहीं, sidebar for स्टार्टिंग this. प्रोसेस रुकिए 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 रुकिए. जो चीज पे उन्होंने बात करी है या फिर जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी आप उस पे ही क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं. आप अपनी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते. एंड रिगार्डिंग टू दैट इट्स अ कॉन्फिडेंशियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो आई एम गोना सस्टेन द ऑब्जेक्शन. थोड़ा सा इससे डिफर करिए बट आई एम गोना टेक दिस अंडर कंसिडरेशन इन माय गिविंग ऑफ फाइनल डिक्री. ओके 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 श्योर. ओके. एक और चीज बताइए फिर हमें मिस्टर डांटेली, are you authorized to send even a clerical text to any of the candidates who have applied for the department or for the job? Yes. You are authorized to, right? I would like to draw attention on his the statement as well, Honorable Lordship. Okay, so let's move forward. Tell me another thing, Mr. Dante. रिजेक्शन का प्रोसीडियर जब आपका हो जाता है देन हाउ डू यू इन्फॉर्म अ पर्सन दैट ही इज रिजेक्टेड? दोबारा पूछिए. एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछिए. आप answer this one? यस यू आर. Yeah, please. नहीं बार क्वेश्चन दोबारा पूछिए. मेरे लिए पूछिए एक बार. अच्छा अच्छा. तो मिस्टर डांटे आप ये बताएं जो रिजेक्शन का रिजल्ट है वो आप जो एप्लीकेंट है उसको कैसे कन्वे करते हैं? You can answer that, officer. Okay. जो लोग रिजेक्ट होते हैं हम उन्हें मैसेज नहीं भेजते. वो जब पीडी आके पूछते हैं कि हाउ मच टाइम इज गोना टेक और उनके रिजल्ट का क्या हुआ, देन वी टेल देम ओके दैट्स इट. सो देयर इज नो आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑन हिज पॉइंट एज वेल, ऑनरेबल लॉर्डशिप. रुकिए ऑब्जेक्शन तो सुनने दीजिए फिर अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट कर दीजिएगा. Your Honor, the learned counsel is not letting the officer complete his statement. He's cutting off in between. He's being argumentative. I'm going to overrule that. He is asking a specific question and the specific witness, procedure, that's it. Yeah. Yep. And the witness is going out of his way to confer to the question. तो वो उनको नहीं करना चाहिए. All right, Your Honor. I'm going to overrule that. Yeah. Again, I would like to draw your attention towards this point as well, sir. कि there is no suo motu disclosure on their part of rejection of a client. ठीक है. And जैसे कि इन्होंने ये भी statement दिया कि वो उनको text करते हैं. If they got selected, then they text them. And as stated by him as well as मैं बस summarize करके बता रहा हूँ. This is not argumentative. Your Honor, I have an objection. बहुत सारे fans आ रखे. Your Honor, जी बताइए. My objection is कि he just mentioned that selected. Your Honor, I would like to clarify. Selected means selected for next step, not for the job. Where it is interpreted, sir?
No, yeah, it should be very clear. There is a difference in I the want steps. I want to hold a side argument in this, Your Honor. The message that was received by Mr. Win Marcus, it clearly mentioned Cadet Win Marcus. Cadet, you have been selected as a cadet. Your So Honor, the- it was Object already my- conveyed. Yeah, Yeah. please tell Mr. Eric, please बताइए क्या बोल रहे थे आप? We have already conveyed इधर them that मत it मारियो was a पहली बात। clerical mistake. Conveyed whom? कोर्ट के अंदर टेस्टिमनी दी है। टेस्ट क्या आप अनोखा जी कहाँ बहन से बातें करते रहते हैं आप भी? तो सर टेस्टिमनी दिया ना, तो कन्वे किया है, तो आई गेस ये भी बताना चाह रहे होंगे ना कि क्लाइंट को दिया है, तो क्लाइंट को नहीं है। दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग, दैट्स इट। सॉरी सर। जरा पीछे कुछ लगा रहा है। शैल वी प्रोसीड चल रहा है वहाँ पे? हाँ जी प्लीज। हाँ जी प्लीज प्रोसीड करिए। हाँ, तो सर जैसा मैं थोड़ा सा समराइज करने के बाद आगे बढ़ना चाहूंगा। Your Honor, summarize तो closing में होगा ना? नहीं बस इतने का भी बस एक और चीज यूनाइट एक शब्द नहीं चाहिए जब आपके मुंह से। I'm barring you for objecting। Noted, Your Honor। अब जितने भी objections होंगे एरिक ये नहीं तो कोई नहीं देगा, ठीक है? Noted, Your Honor। गैस गूस बनिए और दवाई लीजिए थोड़ा। प्लीज कंटिन्यू। यस सो सर जैसे कि अभी तक इतना समराइज मैं करना चाहूंगा कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीडियर लाइक सो मोटर प्रोसीडियर टू डिस्क्लोज अबाउट द फैक्टर्स दैट appellant is whether accepted or rejected properly. Second thing, as mentioned by officer himself, that they texted those person who got selected, and as earlier mentioned by him, that he is authorized to send that text message to those persons. So yeah, It has been noted under record. Yeah. तो बस एक दो चीजें पूछूंगा मिस्टर डांटे। तो जब आपसे ये क्लरिकल मिस्टेक हुआ या जब हमारे क्लाइंट डिपार्टमेंट पहुंचे, तो आपने उस टाइम उनको ये चीज बोला कि आपका फोन चोरी हो गया था? ये सर नो? No. Okay. I'd like to try note this point as well, Your Lordship. Okay. So tell me a last thing, कि whether if you are not the appropriate authority to take the final interview, then by what authority you are selecting people? Objection, Your Honor. Confusing question. Sustained. Maybe rephrase. Sustained. Reframe your question. Yeah. So as mentioned by my learned counsel, that Mr. Vikram is the last officer to whom the appellant should give the interview. Then what is the designation or what is the authority, or by what authority Mr. Dante Lee is I providing the object, my lord। opportunities to the civilians? ये हम पब्लिक नहीं बता सकते कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन किस रैंक को हम रिस्पांसिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं। इट्स कॉन्फिडेंशियल। Sustained। छोड़िए, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो गई। जो चीजें आपको नोट डाउन करवानी थी वो मैंने कर ली है। ठीक है। और कुछ सवाल था अब किसी के पास? मिस्टर डांटे के लिए। डांटे, if you want to leave you can after this. Okay? Got it. Yeah, please proceed. And sir, एक पॉइंट बस मैं नोट बता दूं और कि he is the leading officer at morning shift, घुस जाओ छाती में। as mentioned by learned counsel. अभी मेरा चश्मा चल गया। हाँ, Officer Dante Lee, just a quick question to you. Yes. जो बाकी के cadets hire हुए थे by the LSPD, did they receive the same message? Yep. Basis that same message on the date of 28th at 3 p.m. What did they come to the LSPD for? हाँ क्या? Objection, Your Honor. Asked and answered. He already explained the process. Yes. Your Honor, I'm gonna overrule that. मुझे इस पर थोड़ी clarification कुछ चाहिए। Please proceed with the answer, Officer Dante. Okay. We call them for the last round at that given point. So Vikram would question them and look at them, and then they would get the job. So for hiring. Okay, Your Honor, I would like you to make note on this and basis this an argument that if every individual who selected has been messaged as cadet and their name,
designs that they are an officer or a trainee under the officer. Therefore, they would in turn go for training. If this message was given to everyone out there, they would be there for idly training and not another round of interview. Otherwise, there's no affirmation given from a company or in this case, the LSPD that you are selecting. Yes. There isn't a disclosure that there is gonna be another round of All right, Mr. It's asked and answered. It's asked and answered. Mr. Anoka. Mr. Danteli, can you let the court know as to गरीब लोग हैं how, ऐसे, since as per the discussion with Mr. Yu, he said that the appearance of Win Marcus was inappropriate in interview round number 1 as well as 2. Can you tell the court what was his appearance in round number 1? बोलो gay. He showed up in a white torso, it's like we can also call it as a bunian and a cowboy hat. I still remember it. Even in round 2, he was with a shirt and a same cowboy hat which he was wearing at round 1. The shirt was the same as he appeared to the court No, it was different. currently. It was a proper shirt. ये मेरा tablet है. Okay. And what was he wearing in round 2? Your Honor already answered. Oh, sorry, I had some technical issues, Your Honor. That's why. Yeah, no worries. You got your answer, right? Yeah. Mr. Espucci? So, Mr. Danteli, questioning further on this specific topic, what would be an ideal uniform or outfit a person would wear for an interview? Objection, Your Honor. It's common knowledge, Your Honor. एक इंटरव्यू में कोई भी सूट पहन के एक अच्छा दिख के जाएगा so that it looks formal. Your Honor, the reason of this, कोई भी एक informal way में. I'm gonna overrule. Yeah, please, क्या आप argument present करने की कोशिश कर रहे हो ना? Here to you, man. Your Honor, the reason is that not everybody, Your Honor, has. Officers, एक सेकंड रुकिए. Officers, decorum maintain करने की कोशिश करिए. अगर जो भी बंदा करता है उल्टी हरकत कोई भी, उसको आगे लेके आ जाइए. देव सुनना. I'll make sure उसको $10,000 का फाइन मैं दूंगा. दोनों को क्या सर? मैं तो भी 3, 2, 1. लास्ट वार्निंग है कोर्ट के अंदर, कोई भी अगर हल्का सा भी मिसकंडक्ट करता है या डेकोरम तोड़ने की कोशिश करता है, $10,000 का फाइन है और 1 साल की जेल दूंगा मैं, महीने की भी नहीं, साल की. Please proceed. Your Honor, the reason of that was that not everybody has enough of funds. For example, myself as well, this suit is gifted to me by Mr. Anoka, sir. Otherwise, I would not be able to afford a suit back when I got my bar license. So not everyone has the funds to have buy a suit, in fact. Therefore, he did buy a shirt and he could afford that and come to present himself. तेज बोलिए थोड़ा. Appellants for the interview purpose. The court has Your heard your Honor. argument. No, I have objection to that, Your Honor. पूछिए. It was already clarified that the selection process and criteria is confidential in nature and the LSPD reserves the right to decide Sir, the if criteria. it is confidential, It has I would not like to be Anoka, informed. one sec. Your Honor, can we have a मच्छी मार्केट sidebar? ना बनाइए, मच्छी मार्केट ना बनाइए, साइड बार भी नहीं मिल रहा अभी आपको. I'm gonna overrule that as it is confidential. ये जो argument हुआ इस चीज के ऊपर I'm gonna give my verdict on that as well. But currently I'm noting that argument down on the record. All right. Anoka, if you have any questions, you can go ahead. I have just a last question, Mr. Dante. Whether you were sending text messages to the persons who got selected individually or through something like some bots or something. Leading object, my lord, leading. Overruled. Yeah. Henry, hello city. Please answer to that. Answer. अभी land किया होगा. I'm little confused, like individually as if like where you typing the text he is messages asking and कि वो आपने manually भेजा था या फिर जैसे emails के अंदर we use some AI bots, you know, as it is 2024. We like pile up the numbers and then we send messages one by one, copy pasting the inside text. That's why the instead of you will my copy name, paste one by one, right? let me finish if you won't mind, sir. Okay, sure. So that was, so as you can see, there was one more mistake in my message. It says Henry Charles because I copied that message from my officer, and the list which came in front of me was a list of phone number from which we sent those messages.
Okay. So I'd like to ask you another question on this point. Whether do you copy the candidate's name who got selected or not? Or you just manually put the names? We copy the names. Yep. Okay. So you must have a list नींद for आ रही है that मुझे who got selected. और ऑफिसर बताएं सर बताएं। क्या हाल है Yes, but बढ़िया बढ़िया आप we कैसे? Okay. distribute the Thank names. you. I would जिंदा है like to जिंदा draw attention of the court towards his statement as well, the lordship. बढ़िया लग रहा है वैसे ब्लैक ब्लैक में Yeah, you have my अच्छा मैन अच्छा। इन ब्लैक Don't worry about that. You definitely have my attention. Okay. सिर्फ मैन इन ब्लैक हो And कि मैन विद ब्लैक हो can you please tell me देखना if पड़ेगा it वो was तो a आपको mistake चेक or करना if पड़ेगा। you copied the text मुझे क्यों message चेक करना पड़ेगा तुम्हें अपना नहीं पता being a अबे lead तुम officer, बताएगी isn't ना। it your duty to check अरे the तुम्हें message पता whether होगा तो it तुम is बता दोगे ना नहीं नहीं ऐसे नहीं Objection, Your बताता Honor. मैं। Already asked अरे and मत answered. मत बोलो यू बिलोंग टू द वन नॉन Defense डाउन has बाइनरी already कैटेगरी claimed, Your Honor, it was वन a डाउन। clerical error. कौन वन डाउन He's not देखा नहीं तुमने लेके गया वो। questioning the clerical I error. He is yes. questioning the नहीं देखा negligence मैंने of डांटे your की भाषा officer. बहुत अच्छी है, नरम नरम, उसके ऊपर I'm रखने gonna वाला तो overrule the मजा आ रहा है। objection. Yes, Mr. Dante. काम करते हैं बाहर ही चलते हैं जब Could you please repeat? Isn't it अच्छा your duty to check before copy and pasting a text? Being a ओए public servant or being a government employee, isn't it your duty to बोरिंग check the बोरिंग केस text आ जा message whichever you are sending to a civilian or a upcoming or on the way police केस भी officer बैन का लोड़ा, जज भी मार before sending the text to them? Isn't it your duty? Yes, it's my duty, Oh, but that's it. Thank you, Lordship. I'd like he's to waiting. conclude as of now. Oh my god. I have a few Oh more my God. questions to you, Dante. Yes, sir. If you I may. would like to, may I go back? Wait, Marcus, stop Yeah, you sleeping in the guys can go back. courthouse. Both of you This guys is can a go court. back. I know it's going to be a win. Marcus. Okay, अब यहाँ पे सोइए मत कोर्ट के अंदर प्लीज अगली बार ध्यान ओके ये भाग गए आपके क्लाइंट बाहर भाग रहे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिए When नहीं you नहीं here, मोकला you गई back? अभी Dante, I want some Yeah, we clarification can. on few yes, things yes, as well. Yes, sir. You were discrediting the fact that ये फोन आपका चोरी नहीं हुआ था yes or no? Yes. मेरा phone Uh, चोरी कभी हुआ नहीं. It's with me. The clerical error was made by you as well as your officer yes or no? Yes. You are the May I leading officer explain which on this means one? नहीं I'm just asking you the question. Gotcha. मैं इसके बाद आपसे एक्सप्लेनेशन का टाइम मिलेगा आपको नहीं तो आपके अगर री एग्जाम करना चाहे तो वो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं I'm going to give that liberty to the defense don't worry about that. Got it. पढ़ाई कर One more thing आपने कुछ इसको अमेंड करने की कोशिश की थी इस क्लरिकल एरर को any further messages was sent to the No. appellant कि ये गलती से गया है it's not the message that should have been sent to you and you were apologetic or did anything of that sort to amend such negligence on your behalf? ऐसा कोई मैसेज भेजा नहीं गया था वापस. But when the नहीं day भेजा he गया showed up, I had a chat with him, but he was था in इसको hurry. बाहर लेके आइए और send him for jail. Officers communicate 15-15 महीने के लिए दोनों को जेल भेजे और उनमें से अगर मोटा वकील है तो मोटे को इधर लेके आइए. If that Mota guy is मुझे like आगे बढ़ाओ. Vakil now, He is a lawyer. I Yes, didn't yes. send any Yeah, bring messages him. regarding that day, but when he showed up, People on say he that is going notice out the he main was entrance. cleared. But he was in hurry. As I said, he was not selected. He just ran to different people, like different candidates who were standing in the lobby. Are you guys selected? And he just ran out without even completing my sentence. So that message was not passed. Okay. And आपके मैसेज के अंदर यहाँ पे cadet लिखा गया है. Can you please clarify on that? If you want to, you can whisper it to me. I would be fine with that. Gotcha, sir. Sure thing. So can we approach? Henry, I might require your assistance. Gurpreet sir, I have whatever in the courtroom.
proceed. ये पिंक शर्ट के अंदर बंदा एक बार आ गया, ये that fat guy. Come forward. जी सर। मोटा आप वकील है राइट? हाँ जी सर, आई एम अ लॉयर। क्या कर रहे हैं आप ये पीछे अपने दोस्त के साथ? नहीं मैंने नहीं किया सर, उसने करा है, मैं तो खड़ा हुआ था, वो मेरे से गलती थी, ये वो मसल दब गया था, ये धक्का देने वाला, बाकी मैंने तो कुछ नहीं किया। This will be your last warning. अगर इसके बाद आपकी साइड से मुझे एक भी मिसकंडक्ट दिखता है, I'm gonna strip away your bar license completely. मैं बस आपको मैं बता रहा हूँ, एक वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज अगर अगली बार से आपकी साइड से कोई भी मिसकंडक्ट होता है, I'm not asking कि आपने किया है कि नहीं, अगर अगली बार से होता है तो मैं I'll strip away your bar license completely. I hope that's clear. Okay? And officers, इनसे नाम लीजिए कौन थे वो व्यक्ति, send him for jail 20 महीने के लिए और $500 का फाइन लगाइए उस पर कंटेम्प्ट का. Yes, sir. Dante, you can go back to your seat. थैंक यू। जी सर, आ जाए बाहर, आ जाए, बता देता हूँ। नहीं I'm good. जी ये थोड़ा तेज बोलिए। मिस्टर विन मार्कस को अगर आप बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। उसका नाम है सर कांचा भाऊ, नाम है उसका सर। हाँ जी। बस और लाल टी शर्ट, अपनी शक्ल तो देख उसकी बस। हाँ देखिए बाकी हम पे डिटेल्स होंगी वैसे उनकी। उसको पकड़ा नहीं आपने? वो पकड़े गए और पकड़े गए ना वो? तो बढ़िया है सर। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे डेकोरेटम में कितना अच्छा केस चल रहा है, ये कांचा ऐसे कर रहा है, शर्म ही नहीं आती। 8242 गुरप्रीत सर। सर सर जज साहब ने बोला है 20 महीने की जेल, $500 फाइन। नहीं सर, नहीं मेरा कुछ नहीं लगता सर वो। ठीक है, बस ये देखो ना आपका लाइसेंस वगैरह ना आ जाए। नहीं मेरा भी जाएगा, मैंने कुछ किया थोड़ा सर, उसने ड्रिल किया। अच्छा आप टैक्सी ड्राइवर भी थे, प्लम्बर भी थे क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन रेलेवेंस पूछ रहा था, क्लैरिफाई कर रहा था, बस क्लैरिफाई कर रहा था योर ऑनर। इतनी सारी जॉब्स नॉटी मत होइए कोर्ट के अंदर। अच्छा तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि आप इतने सारे जॉब्स कर रहे थे यहाँ पे, तो आप टाइम कैसे निकालते थे, कितना कितना समय देते थे हर जॉब पे? ऑब्जेक्शन रेलेवेंस योर ऑनर आई एम ट्राइंग टू it's the capability of the client. Overruled. Please. Can you repeat your question, please, Mr. Vinay? हाँ जी, आपने बताया कि मिस्टर मार्कस आप 4 अलग अलग जॉब करते थे, आपका ग्रुप इज 6 सीनियर बंस, यू वर आल्सो अ टैक्सी ड्राइवर, और भी कुछ था, इफ आई एम मिसिंग समथिंग। यश कितना जेल अच्छा उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि आप फ्रीलांस भी करते हो, व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? Stated, sir, part-time driver. Sound out 02 Yash Rao. Mr. MP sir, उनका मैं ड्राइवर हूँ। Like if somebody needs a personal driver sometime वो comfortable नहीं होते ड्राइविंग में, so I used to help them to drive them to a specific location. अच्छा तो आप कितना समय देते हो? Sure sir. चल ले बाहर चल ले, छोड़। मल्टीटास्किंग है ना सर? डायरेक्ट टू गुरप्रीत सर। हाँ जी सेंड इट। अच्छा हाँ जी, तो मैं पूछा था कितना कितना समय देते हो हर काम में? दिन में तो 24 घंटे होते हैं ना। ऑब्जेक्शन रेलेवेंस $500 ना। योर ऑनर सेम क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था उस टाइम पे। ऑब्जेक्शन आस्क्ड एंड आंसर्ड होगा, इसलिए ओवररूल कर रहा हूँ, गलत ऑब्जेक्शन मत करिए। आगे करिए, कंटिन्यू। पूछा था क्या? सॉरी। हाँ जी मिस्टर मार्कस। Sir, as a collective, you can say I gave 16. डिफेंडेंट लॉयर को ही नहीं पता कि पूछा था कि नहीं, मतलब किसमें कितना कितना वही पूछ रहा हूँ मैं। So basically, I थोड़ा अपना बेसिकली अगर मैं थोड़ा साफ शब्दों में बताऊँ ना, अपना दिनचर्या बताइए, डेली शेड्यूल कि आप मतलब क्या क्या काम करते हो। सर दिनचर्या फिक्स नहीं रहता, बट एज एन सर ऑब्जेक्शन रेलेवेंस सर। I am an सस्टेन्ड बहुत मौका दे दिया आपको मैंने, फाउंडेशन ले करने का बहुत टाइम ले चुके। ठीक है योर ऑनर, आई विल कट इट शॉर्ट, आई विल कट इट शॉर्ट। तो आप इतने सारे अभी जॉब्स कर रहे हो, सो जैसे ही आपके पास मैसेज आया, राइट, सो ऑल दीज जॉब्स परमानेंट जॉब्स और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स? सम परमानेंट एंड फ्रीलांस वर्क तो बताइए सर आप। Correct. So these are not permanent, right? If I may say. Yes, 2 jobs. I object, Your Honor. He just said some permanent, and Mr. Unite is saying that not all. He's like to, Your Honor, he's leading, sir. Leading, sir. Sustained. Lead मत करिए, testify मत करिए witness के behalf पे. Noted, Your Honor. I'll take that in mind. हाँ जी, so आप बताइए कि आपने कितनी बार अप्लाई किया है
for LSPD job? सर मैंने 2 बार एज ए वॉक इन इंटरव्यू, कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं था, सो आई वेंट 2 टाइम्स. फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट हैविंग द प्रॉपर क्लॉज, मे बी मैं गरीब इंसान हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे, सो आई वेंट देयर, आई अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड जो भी ऑफिसर वहाँ पे थे उन्होंने मुझे बताया कि यू आर नॉट इन द फॉर्मल, यू हैव टू अपीयर इन अ फॉर्मल ड्रेस. तो मैंने कुछ भी जुगाड़ करके दोबारा मैं अपेयर हुआ था फॉर्मल ड्रेस में. आई वाज वेयरिंग फुल शर्ट प्रॉपरली एंड पेन एंड प्रॉपर शूज. जो मैं समझ गया. अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आपके पास 4 जॉब्स थी. इफ आई मे आस्क, सिंस आपने डैमेजेस क्लेम किए यहाँ पे, कितना कमाते थे आप फ्रॉम ईच जॉब? I object, Your Honor. Objection, relevance. Your Honor, damages have been claimed. Overruled. Damages काउंट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. Please कितना proceed. कमाते थे आप? एक एक करके पूछूंगा. सीनियर वंस कितना कमाते थे? Yeah, so as my mainly job is senior bun, so I make like around $3,000 and at the group E6 $2,000, and you can count as freelance work as a $5,000 collectively. All right, perfect. And ये per day का हिसाब है, right? Yes. मिस्टर Not मार्कस, specifically, एक sir. मिनट डायरेक्ट, एक मिनट दीजिएगा. पर डे का हिसाब है, राइट? ये Not specifically estimated, sir. estimated, approx per day, if I may say, right? Asked and answered. Asked and answered, sir. All right, thank you. Sustained. Your Honor, I would like to bring to your notice, अभी आपसे स्टेटमेंट देते वक्त इन्होंने कहा कि ये कितने गरीब है कि एक कोट नहीं खरीद सकते, एंड इनकी पर डे इनकम इज अप्रोक्सीमेटली $10,000. योर ऑनर, ऐसे गरीब तो पूरा शहर हो, पूरा शहर ऐसा अगर गरीब हो ना योर ऑनर, तब तो योर ऑनर आप बताइए, ऐसे गरीब सब होने चाहिए. बताओ आप योर ऑनर, मेरे पॉकेट में $10,000 नहीं है आज के वक्त, एंड इनका डेली इनकम इज $10,000. ये गरीब कैसे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ सूट, मिस्टर मार्कस? प्रोफेशनली बात करें तो सर वो तो मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाता. $35, योर ऑनर, $35. I object, Your Honor. That is speculation. The suit pricing varies on material. मटेरियल क्या? क्लोथिंग स्टोर पे तो $35 का मिलता है, मैंने भी खरीदा है. Sir, but if you go to a branded store, you can get for more expensive. You can even get for cheaper, sir. So इस शहर में कहाँ पे ब्रांडेड स्टोर है, मुझे जरा बताइए वेस्पूची जी. So what I mean is specifying जरा हम भी जाए अपने पैसे वहाँ पे उड़ाए हम भी. He is specifying $30. He's being pinpointed with the amount, sir. Your Honor, I would like to call in perjury and contempt on Mr. Vin Marcus. He claimed he is garib and he couldn't afford the shirts and blazers, whereas he earns $10,000 per day. I would like to object on this point. Can you interpret the word garib? बताइए. वो क्या बात कर रहे हो यार ह्यू जी? बताइए गरीब, बताइए आप, बताइए. मैं तो 1 लाख रख के भी खुद को गरीब कह सकता हूँ. तो Your Honor, ये क्या बात है? Everything, Your Honor, this is the bogus case. They are trying to waste the time of the court here, Your Honor. We are not. Okay, प्लीज प्रोसीड करिए अपने जल्दी आगे सारे क्वेश्चंस के साथ. हम ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते अब इसके अंदर. All right, Your Honor. Your Honor, ठीक है Your Honor, I would continue and move ahead. हाँ जी, तो आपको जब ये मैसेज आया, आपने क्या क्या काम छोड़ दिया? First of all, asked and answered. Sustained. एक सवाल को 6 बार पूछने से सवाल का आंसर नहीं बदल जाएगा. ह्यू, Sir, he is trying to lead, what sir. I'm trying to ask is, बात को घुमा फिरा के पूछ रहे हो. freelancing job. Freelancing job is not a permanent job. उसको छोड़ा नहीं जाता है Your Honor. वो कभी भी कर सकते हैं. There is no resignation letter involved. Your Honor, इसमें when you're applying for a government job, sir, you cannot freelance. Sir, waste of time नाम का एक चीज है, पता है? That's a valid argument right there. Hugh, इसका Your Honor, कुछ if you want counter? me to counter. Can I counter? Your Honor. Yeah, please. Please, Eric, आप शुश. हाँ, Eric, आप बोलिए, मैं नहीं बोल रहा. मिस्टर मार्कस, आपने बताया कि आपने सीनियर बंस पे काम करा है, राइट? Yes. क्या आपने वहाँ पे कोई रेजिग्नेशन लेटर दिया था? नहीं सर, सीधा मैनेजर के मुंह पे बोला था. Sir, I would like to object on this point. There is no अरे specific मैं बोलने तो दीजिए procedure. अपने विटनेस को. अनोखा जी, 1 मिनट शांत हो जाइए. जरूर सर. So basically सर, मैं मैनेजर के पास गया, मैंने उनको गुड न्यूज़ दी एंड उन्होंने मुझे गुड विशेस दी, बट उनका पुलिस के साथ पता नहीं कुछ जो भी है. He clearly stated that you will not be welcomed at the senior bunch
अभी भी I think बहुत से पुलिस वाले से काम करते हैं, but he clearly stated that if you're going, you're going. और दोबारा नहीं हो सकते, बट हाँ रेजिग्नेशन वहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं लिया जाता, बट मैनेजर को मैंने बोल दिया दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द शिफ्ट्स. ओके माय लॉर्ड प्लीज ये नोट कर लेना. जी अगले कुछ सवाल है या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला ले? दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. ओके दैट्स इट योर ह्यू ऑनर. आप चुप रहिए, ह्यू आप चुप रहिए. अनोखा आइए, आप क्रॉस एग्जामिन करिए. यस यस सर. हम भी आ सकते हैं? अनोखा आप वापस जाइए, अनोखा आप वापस जाइए, आप वापस जाइए. वेस्पुची आगे आइए, जाओ आप यार क्रॉस भाई. एग्जामिन करेंगे. आप जाओ करिए जाओ. क्रॉस एग्जामिन. मिस्टर विनमार्कस, कैसे हो आप आज? 7142 ऑफिसर मॉर्गन. शादी करेगा जल्दी Have कर. you been looking for any jobs? Yeah, like your life is going good, fine. It's okay right now. 7142 ऑफिसर मॉर्गन. I have been waiting for the Enforce ended. वो जैक आपकी गाड़ी में ही है. ट्रैकर दिख रहा है मुझे. Mr. Vinmark is asking from the questions NCM. asked to you, all He's right? right I'm here being very at PD. direct with my questions. मुझे घुमा फिरा के पूछना नहीं है. You work for 4 jobs, 3 to 4 jobs, correct? Correct. Since we are talking about income and since my opposing counsel asked for your income, on a daily basis, considering the unemployment you've been facing, how much income would you have potentially gained? 20 to 25,000 as a process. Objection, Your Honor. Speculation, Your Honor. Overruled. Please continue with the questioning. Can you repeat the answer for me? And I'm gonna slap you if I come down there. मैंने क्या बोला? आप दोनों बीच में नहीं आएंगे, उन्होंने खराब. You guys are barred from examining and cross-examining for now. आप आगे आइए. अगर जो भी ऑब्जेक्शन करेगी एरिक करेगी, और एरिक अकेले करके कान में खुसफुसाना भी नहीं चाहिए मुझे. पीछे आके खड़े हो जाइए हिबा के साथ. जाइए पीछे जाइए. Please continue. Alright, so he did claim 22,000, but we are not really asking for that kind of compensation. That's why the compensation amount has been stated to be lower as per the petition. So, Your Honor. Okay, moving forward, on the date of 28th of January at 3 p.m., where were you? I appeared at the police department reception and I saw no officer. And from the yellow pages, I saw the number of Mr. Dante Lee. And I called him that I'm here for my training or, whatever the process was further. And he came to the reception and he clearly stated that Vinmarkus, your result is on hold. And there was some mistake. His phone was stolen and the messages were sent by mistake. I kept crying on the reception for a while, asking him, sir, please check again. Maybe there is some mistake because I got 2 messages from 2 different numbers. And he clearly stated that no, your result is on hold. You can go. You cannot join. And my lord, there was more persons right there having some kind of break. I went to them. I can't recall the names, but I asked them, are you guys the new cadets? And they said yes. I asked another question that, are you guys here for the training? They said yes. 28th date, January, 3 p.m. I was not welcomed. All right. And what did you do after getting this information that Mr. Dante Lee said, as per you, that you are on hold? So basically, I waited for a while. I haven't got any text, any more text, any confirmation from these guys. And then I wanted to contact the lawyers. I, gained a legal consultancy by contacting Mr. Michael Vespucci and Mr. Anokha Wilson and Mr. MP Zar. And they give me, they just took my case. And here we are. I have been waiting for a while to, just this court case. Still, So I'm waiting for the decision. I just want the court to understand, to know one thing, Mr. Vinmarkis, that you worked as senior buns employee. You had multiple freelance jobs, and as stated, your average income of a day was $10,000. So, what interested you to become a PD officer? Sir, I would love to clarify this thing. मेरी माँ का ये सपना